The Maharashtra elections were held in a single phase, and now the exit poll and the posters are saying that the Mahayuti has a very clear edge in Maharashtra. But some exit polls are also saying that there could be a close fight between the NDA and the Mahayuti alliance. Now remember, viewers, November 23rd is a date when the results are going to come out. That is this coming Saturday, where the election results of both Jharkhand and Maharashtra polls will be out. Of course, we will be tracking that story very closely for you and getting you the live updates. But as usual, we're getting some reactions coming in. Let's go ahead and play them out. All right. Okay, so you can see those pictures coming in. Fadnavis is saying exit polls will hold the true in Maharashtra. They will show the true pictures. This is what he is saying. Fadnavis is saying exit polls are showing the true pictures in Maharashtra. Remember, the exit polls are saying that Mahayuti has a big edge. Okay, let's go ahead, viewers, and play out all the reactions that we are tracking. मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। We expect to cross 160, that is my prediction. Or even, that may be wrong also, it may go still higher, but whenever the independents they come, they usually join the ruling party. So that chunk of MLAs, which could be around 10 to 12 or maybe 15, may join us. देखिए, एग्जिट पोल होते हैं, हम तो एग्जैक्ट पोल की राह देखेंगे। एग्जिट पोल काफी समाधानकारक चित्र महायुति को दिखा रहे हैं। फिर भी हमें भरोसा है, हमने जो काम किया है, 2.5 साल महाराष्ट्र में माननीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में महायुति की सरकार चली और बहुत बेहतरीन काम हमने किया है। किसानों के लिए, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम लाकर और समाज के हर तबके तक हमने पहुंचने का काम किया है। महाविकास आघाड़ी की सरकार पहले 2.5 साल में थी, वो रुकावट वाली सरकार थी, महावसूली सरकार थी, बाधा वाली सरकार थी, बाधाएं डालती थी हर काम में। तो एग्जिट पोल तो समाधानकारक है, मगर फिर भी हम राह देखेंगे जो असली पोल के निकाल आएंगे, चुनाव के जो नतीजे आएंगे। बस 2 दिन की बात है और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है। All right, let's move ahead right now to Jharkhand, viewers. Remember, Jharkhand voted in single phase, double phase yesterday. Yesterday was the second phase of the polling in Jharkhand. And now, after the second phase of elections ended in Jharkhand, we're seeing that exit polls have gone ahead and predicted that the Hemant Soren-led JMM and India Alliance and the BJP, the NDA there are quite close. In fact, we're seeing that it's a neck-and-neck fight in the state. That means that there could be a hung house. The fight was on 81 seats, with key candidates being JMM's Hemant Soren, BJP's Babulal Marandi. The state went to polls in 2 phases, that is right, double phase elections, with yesterday being the last phase. The results will be out on November 23rd, that is Saturday, along with the Maharashtra election results. This is a detailed report on the exit polls and what the pollsters are predicting for Jharkhand. The BJP made the illegal crossovers of Bangladeshi Muslims central to its poll plank in the state of Jharkhand. In rally after rally, the BJP's heavyweight campaigners, including Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, promised a crackdown on infiltration and illegal settlers if NDA comes to power in the state. झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। The BJP's key poll minders for the state, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, went a step further, vowing to enforce the NRC to send back the illegal aliens.
हमारे झारखंड में पहला बार हमें घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए एनआरसी और एनआरसी जैसे सर्वे हमें करवाना ही पड़ेगा। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। However, as polling for phase 2 closed in Jharkhand, 2 separate exit polls put out contrasting numbers for the NDA in the 81-member assembly.